So, very good afternoon to all of you. Very good afternoon. Without having any guilt in the mind about the first failure in the attempt of September, we are going to restart our innings. करेक्ट. ये तो गेम ऑफ क्रिकेट जैसे हो गया. एक इनिंग में आउट हो गए तो इसका मतलब गेम तो खत्म नहीं हुआ है. गेम तो अभी शुरू हुआ है. अभी भी अपनी आंखों को जमाएंगे, पैरों को जमाएंगे, तो ये खेल आसान है आगे बढ़ना. But if I say that this giving the exams is like playing the game of cricket, उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसकी कुछ कैलकुलेशंस होती है, उसके आगे कुछ सोच होनी चाहिए. तो क्या सोच होनी चाहिए ये पहले हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. देखो, ये सीए का कोर्स है. फेल्यूर इज वेरी कॉमन. तो फेल हो गए मतलब ऐसा कुछ अलग हो गया, ऐसा कुछ नहीं है. होता क्या क्या है कि आप 10th स्टैंडर्ड तक कभी फेल नहीं हुए थे, 11th स्टैंडर्ड में कभी फेल नहीं हुए थे, 12th स्टैंडर्ड में भी फेल होने का मौका नहीं मिला था. लेकिन फेल्यूर जब सितंबर अटेम्प्ट में आपका हो गया तो पहली बार जिंदगी में किसी एग्जाम में आप फेल हो गए हो. तो ऐसा लगता है कि ये फेल हो गए तो कुछ क्राइम किया है, कुछ अलग किया है, कुछ गिल्ट आता है मन में. फिर कोई ऐसा डाउट भी आता है कि क्या हम इसको कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे. अपने पास उतनी काबिलियत है कि अपने पास उतनी इतना इंटेलिजेंस है क्या ये करने जैसा. ऐसे सारे बहुत सारे ढेर सारे सवाल मन में तैयार होते हैं. बट आई टेल यू, विदाउट हैविंग अ डाउट इन द माइंड whatsoever, that each one of you is capable of clearing not only foundation but also intermediate and also final. समझा? तो पहले तो जो भी थोड़ा सा गिल्ट अगर मन में हो फेल होने का, तो वो पहले मन में से निकाल दो. क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में पास होने से सीए के कोर्स में फेल होने का स्टेटस थोड़ा ज़्यादा होता है, बढ़कर होता है. समझा ना? फेल कहाँ हो गए? फेल सीए में हो गए ना. फेल 10th स्टैंडर्ड में थोड़ी हो गए. तो फेल हो गया, इसका कोई कोई गम नहीं होना चाहिए. बट अभी जो अटेम्प्ट देना है जनवरी का, उस जनवरी के अटेम्प्ट में नॉट ओनली वी हैड टू पास गेटिंग 50% बॉर्डर लाइन मार्क्स, एम शुड बी दैट वी शुड बी गेटिंग एज मेनी मेजर मार्क्स एज पॉसिबल. जो स्कोर करना है वो बहुत सारा बड़ा स्कोर हमें करना है. तो ये बड़े स्कोर करने के लिए कुछ अपनी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए, कुछ आउटलुक होना चाहिए, कुछ प्लानिंग भी होना चाहिए. तो क्या प्लानिंग होना चाहिए? तो हमारे पास स्कोर करने के लिए कहाँ मौका है? बेसिकली मौका है मैथ्स में और इकोनॉमिक्स में, क्योंकि वो एमसीक्यू स्टाइल ऑफ एग्जाम है. तो वहां अगर आपको मान लो कि 70 मार्क्स अगर आप मिला सकते हो. हाउ मेनी मार्क्स डिड आई से? 70 भी मार्क्स अगर मिलाते हो मैथ्स में और इको में 70, और अगर अकाउंट्स में आपको बॉर्डर लाइन मार्क्स मिलते हैं 50-50, तो भी यू कैन सी दैट द टोटल इज अ हैंडसम टोटल. 240 हो गया टोटल. And 240 out of 400 will, which will mean 60%. ओवरऑल कितना परसेंट हो गया? 60%. तो 60% मतलब फर्स्ट क्लास होता है. तो तुम्हें फर्स्ट क्लास कहाँ मिला है? एफवाई बीकॉम में नहीं, सीए के पहले एग्जाम में आपको फर्स्ट क्लास मिला है. तो फिर आपका स्टेटस बढ़ेगा, आपको खुद के बारे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील होगा इंटरमीडिएट के लिए. तो अभी हमें एक बेसिक टारगेट रखने का है. वो टारगेट 50%, ओवरऑल एग्रीगेट में 50%, ये टारगेट नहीं होना चाहिए. तो ये टारगेट होना चाहिए मिनिमम ये 240. तो ये सवाल आता है कि ये अगर 70 मार्क्स आपको मिलाना है मैथ्स में, समझा? तो उसके बाद कुछ एक डिटेल प्लानिंग होनी चाहिए कि विच चैप्टर्स विल यू प्रिपेयर एंड विच चैप्टर्स यू कैन कंसिडर टू बी लिटिल माइनर चैप्टर्स.
तो व्हाट प्लानिंग कैन बी देयर, इसलिए लास्ट 10 अटेम्प्ट में से कौन से चैप्टर पे कितना वेटेज आया था, कौन से चैप्टर के कितने मार्क्स आए थे, दैट आई एम शोइंग टू यू एंड प्रेजेंटिंग बिफोर यू फॉर एनेबलिंग यू टू मेक अ प्लानिंग ऑफ हाउ यू आर गोइंग टू स्टडी। तो अगर यहाँ देखेंगे, इसके तरफ देखेंगे, तो फिर जो पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी जिसे कहा जाता है, उसका वेटेज कितना है, अराउंड 12 मार्क्स का, 12.8 है, पर हम 12 मान के चलेंगे, थोड़ा इधर थोड़ा उधर हो सकता है, तो ऑन एन एवरेज हम कितना पकड़ के चलेंगे, 12। तो 12 मार्क्स का होगा मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, और उसी के साथ हम शुरुआत करने वाले हैं। अगर मैथमेट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन एंड सैम्पलिंग, ये अगर, और डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, इन चैप्टर्स को अगर तुम कंबाइन करेंगे एक ब्लॉक में, उसको कंपोज करेंगे, तो उसका वेटेज कितना होता है देखो। सी हाउ मच इज द वेटेज ऑफ दैट, यू कैन फाइंड आउट द वेटेज, यू कैन टेक द टोटल, कितना होता है करो, 12.3। कैलकुलेटर निकालो, और चार्टर्ड अकाउंटेंट विदाउट कैलकुलेटर इज अ बार्बर विदाउट रेजर। Unused calculator in the bag is like unexpressed love in the heart. क्या काम है, समझा ना, करो टोटल, 12.3 प्लस से 6.4 एंड प्लस 2, करो कितना होता है, 33, समझ के चलो, कितना पकड़ेंगे, 33। अभी ये सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, स्टेज, ब्लड रिलेशंस एंड नंबर सीरीज इन कोडिंग डिकोडिंग, ये हो गया 4 लॉजिकल रीजनिंग के चैप्टर्स, उसका तो 20 मार्क्स होगा ही, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, लेकिन 20 मार्क्स का श्योर आता है, इट डेफिनेटली गोइंग टू बी ऑफ 20 मार्क्स। तो ऐड करो कितना हो गया, 53। अभी कोरिलेशन रिग्रेशन इज अ वेरी सिंपल चैप्टर, 4.7 है, 5 पकड़ के चलो, तो कितना हो गया, 58 हो गया। इंडेक्स नंबर इज अ वेरी सिंपल चैप्टर, सपोज द वेटेज इज ऑफ 4 मार्क्स, कितना हो गया, 62 हो गया। फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, अ वेरी सिंपल चैप्टर, उसके 4 मार्क्स पकड़ो, 4.4 है, लेकिन 4 कितना हो गया, 66 हो गया। और फिर प्रोबेबिलिटी के 5 मार्क्स, कितना हो गया, 71। और डिस्ट्रीब्यूशंस करो, 6 मार्क्स पकड़ो, 77। और फिर सेट रिलेशन फंक्शन 3 पकड़ो, 80। और फिर ये इनइक्वालिटीज का एक ही पकड़ो, कितना हो गया, 81। ये 81 मार्क्स का अगर आप तैयार करोगे, तो कुछ क्वेश्चन नहीं भी आएंगे कहीं तो भी 70 मिलाना नामुमकिन नहीं होगा, मुश्किल नहीं होगा, इट इज पॉसिबल, इट इज गेटेबल। एंड देयरफॉर वी आर गोइंग टू स्टार्ट in that sequence, the revision will be taken in that sequence। पहले कौन सा होगा, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, फिर क्या लेंगे, एमसीटी, एमडी, डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, सैम्पलिंग, ये आसान मार्क्स है, समझा। और हम सिर्फ रिवीजन नहीं लेंगे, तो रिवीजन के साथ एमसीक्यू, जो टिपिकल एमसीक्यूज है, वो भी सॉल्व करेंगे, एंड अ स्पेसिफिक बुक विल बी गिवन टू यू फॉर दैट रिवीजन बुक, उसमें से हम उसको सॉल्व करेंगे। In addition to that, in the night हम कुछ करेंगे, रात को क्या करेंगे, रात को हम MCQ सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे, समझा। I'll give you a set of questions and we shall solve those questions in the night, एडिशनल प्रैक्टिस करेंगे। ये 81 मार्क्स की प्रैक्टिस हमें किसी भी हालत में करनी है, क्योंकि मैंने ये 81 का क्यों जिक्र किया, क्यों मेंशन किया, क्योंकि ये नॉन मैथमेटिकल मार्क्स है। यहाँ आपको मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा होने की और स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिक्स ज़्यादा लगता है वो ये चैप्टर्स में, आगे जो चैप्टर्स है उसमें, समझा क्या। एंड देयरफॉर आई एम कीपिंग देम अ लिटिल असाइड, ये जो चैप्टर्स जहाँ ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं लगता, ज़्यादा मैथमेटिकल माइंड की ज़रूरत नहीं है, जहाँ थेरी ज़्यादा है, जहाँ कुछ फॉर्मूले तैयार करो और उसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करो, इस तरीके की सिचुएशंस है, वहाँ हम ज़्यादा
वहाँ उसको पहले वेटेज देने वाले हैं। एंड देयरफॉर आप पास हो गए और वो भी 70 के साथ, ये जिम्मेदारी आपकी नहीं होगी, ये जिम्मेदारी हम लेंगे। बट आपकी एक जिम्मेदारी है कि एक भी लेक्चर मिस मत करो। आई एम टेलिंग यू दिस टाइम एंड अगेन। हम क्या करेंगे जब ये रिवीजन, थोड़े इन चैप्टर्स की रिवीजन खत्म होगी तो हम क्या करेंगे कि जो आपका पेपर था जिसमें आप फेल हो गए थे, उस पेपर को हम सॉल्व करेंगे। एंड देन यू गेट अ फील, देन यू विल डेवलप दैट काइंड ऑफ थोड़ा सा गिल्ट आ भी गया उस समय मन में तो भी चलेगा कि हम क्यों फेल हो गए, फेलियर का रीजन ही नहीं था। इस एंगल से अगर आप करेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। एंड therefore we are going to start in the specific order। तो पहला चैप्टर किसका होगा? मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। समझा? अभी हर चैप्टर में हम क्या करेंगे, क्या टाइप्स है उसका डिस्क्रिप्शन पहले लिखेंगे, कुछ टिपिकल क्लासिकल क्वेश्चंस अगर उस पे ऊपर हो तो उसको हम डिस्कस करेंगे, और वो करने के बाद फिर हम बहुत सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर? आपको कुछ पूछना है तो पूछो। If you want to say something, you can say. If you want to ask something, you can ask. बोलो, कुछ कहना है तो बोलो। आपको कुछ कहना है, आपको कुछ नहीं कहना है, हमें भी कुछ नहीं कहना है, हमें सिर्फ क्या करना है, और क्या करना है, रिवीजन स्टार्ट करनी है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। ऑलराइट, तो हियर वी बिगिन, here we start, here we start with the revision. And what is the first chapter for the revision? Mathematics of finance. And mathematics of finance for how many marks? Mathematics of finance for how many marks? 12 marks. तो उस 12 मार्क्स के लिए, उन 12 मार्क्स के लिए पहला टाइप होता है, the type number 1 is problems based on simple interest. Heading though, type number 1. Type number 1, problems based on simple interest. Problems based on simple interest. Alright. The problem based on the simple interest is going to be the first type that we are going to discuss herein. Alright. Now look at B. Basically होता क्या है? You have the terms involved in this case, and first is P. What is P? P is the present value. पहले अपने दिमाग में इसे अच्छी तरीके से उतारो। P is the present value. P is not the price, but the present value is also called the principal value. And this principal value can be a loan borrowed in case of the loan problem, or it could be the deposit if you keep the deposit in the bank for a certain period. So what is P? P is the loan, P is the deposit, P is the present value, आज की value. P is the present value, which is today's value. That is the principal value. समझा? What is R? R is the rate of interest per annum. It is the rate of interest that is per annum, per year. Annum मतलब year. Rate of interest per year. N is the number of years. N is always the number of years. N is always the number of years. Say yes. N is always the number of years. Now my question to you is, tell me, if I say 7 months, तो 7 months को भी years में convert करना है। बस 7 months को अगर years में convert करना है तो I will have to divide it by 7, that 7 is divided by 12, and it will become the number of years, that is 7 upon 12 years. And therefore यहाँ एक बात आपको समझना है कि the number of months,
divided by 12 should give you number of years. So for example, लिखो 7 months is nothing but 7 upon 12. Now do it on the calculator. 7 upon 12 comes out to be what? हाँ, तो अभी इस चैप्टर में कैलकुलेशन विल बी डन टिल मिनिमम 5 डिजिट्स. 6 डिजिट ले गए तो चलेगा, 4 डिजिट्स ले गए तो नहीं चलेगा, क्योंकि then your answer will not match with the choices given. समझा? And therefore these many years will be A. Now A is going to be the future value. A is going to be the future value. A is going to be the future value. Now what is future value? It is the present value plus interest on that. It is the present value plus interest on that. Say yes. तो समझो मैंने 100 रुपीज का डिपॉजिट किया एंड मैंने कहा कि ये 100 अमाउंट्स टू 20, 100 अमाउंट्स टू 120. So what amounts is P and it amounts to what is A? P becomes A ना, तो 100 becomes 120. I repeat, P becomes A. That means 100 becomes 120, 120. तो मेरे को बोलो ये P 100 plus interest thereon is 20. And that is how you are getting the A, which is nothing but 120. And therefore tell me what relationship you would get here. It is A equal to P plus interest thereupon. P plus interest thereon. समझा ना? Now question arises that in case if I say money doubles, if I say that money doubles, because जो पॉपुलर वर्डिंग है उन वर्डिंग को आपको समझना है, उस वर्ड्स को आपको समझना है. तो my question to you is tell me that in case if I say that money doubles, तो फिर क्या होगा? If my wording is that money doubles, what does it mean? तो money doubles मतलब जो भी आपने डिपॉजिट रखा है P, that is P, वो डबल हो गया, तो A will be equal to 2P. Then A will be equal to 2P. P is P and A is 2P. ये वर्डिंग जितना आपके दिमाग में रहेगा, जितना ज़्यादा स्ट्रांगली रहेगा, जितना ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा, उतना ये चैप्टर आसान बनेगा, क्योंकि दिस टाइप वर्डिंग कीप्स ऑन कमिंग टाइम एंड अगेन. तो मनी डबल्स मतलब P is P and A is 2P. My question to you is tell me money triples. What is the wording? Money triples. Then what will it mean? जो भी P is P, but A कितना हो गया? 3P. P is P and A is 3P. जितना भी डिपॉजिट आपने रखा है वो ट्रिपल हो गया, नहीं तो फिर जितना लोन आपने लिया है वो भी ट्रिपल होके आपको वापस करना पड़ेगा. तो P is P and A is 3P. समझा? If I say money increases by 20%, money increases by 20%, तो फिर वहां उस केस में क्या करेंगे कि P is P और A will be equal to 1.2P, क्योंकि 1.2 मतलब 20%, 0.2 मतलब 20%. समझा ना? तो P is P, A is 1.2P. इस वर्डिंग के साथ फ्रेंडशिप करो. If I say that the money rises by 35%, क्या कहेंगे? P is P and A is 1.35P. Say yes. My question to then is, if I say that the interest is half the sum, interest is half the sum, now what will happen? It will mean P is P, but interest is half the sum, na? So interest is 1/2 into P. Say yes.
P is P and A is 1.2 P. I repeat, P is P, A is 1 by 2, I is 1 by 2 P. If I say interest is 30% of principal, interest is 30% of sum, क्या कहेंगे? P is P and interest is 30%, तो 30% मतलब 30 over 100 of P, which is going to be what? 0.3 P. समझा ना? Is that clear? That should be clear basically. समझा? Then my question to you is, tell me if that is true in the type 1 simple interest. Tell me, now you will tell and I will write. My question to you is, tell me what is the formula for interest, simple interest. Tell me what is the formula for simple interest. That simple interest is nothing but P into N into R and that over 100. And tell me if I want future value A, then what is the formula? P into bracket 1 plus N into R and that over 100. So the basic formula is that simple interest is equal to P into N into R and that over 100. And then future value A is equal to P into bracket 1 plus N into R over 100. Say yes. तो मेरे साथ बोलो, simple interest equal to what? एक साथ जोरत, loudly. P into N into R over 100. A equal to what? P into bracket 1 plus N into R over 100. Repeat. Tell me A equal to what? A equal to P into bracket 1 plus N into R over 100. And simple interest equal to what? P into N into R over 100. Now my question to you is, tell me, how do I convert months to years जो हमने अभी लिखा था दादा? How would I convert? How do I convert the months to years? Bolo. How do I convert the months to years? Bolo. So in case if I have been given with what number of months? So 7 months दिया है तो that is equal to what? It will be 7 divided by 12 years. ये हमने लिखा है, दोबारा लिखेंगे. अभी कभी कभी उल्टा होता है. That suppose if I get 5.58 years. So what does it mean? 5 years are complete. And you have 0.58 years. Fraction कितना है? 0.58 years. तो हम क्या करेंगे? This means 5 years are complete. And then 0.58 multiplied by 12, these many months. So I am breaking this fractional number of years into years and months. Yes. So tell me 5.58 years मतलब क्या? 5 years are complete and 0.58 multiplied by 12 these many months. तो 0.58 into 12 करके देखो कितना? 6.9. अभी 6.9 can be rounded up to 7 and therefore it will be like what? 5 years and 7 months. तो कभी कभी क्या होता है कि choices में they give the answer as years and months. So if you have the fractional number of years, sometimes you need to convert it into years and months. So 5 years complete and 0.58 multiplied by 12 these many months. Is that clear? So tell me, what is the formula for the simple interest? P into N into R over 100. Tell me A equal to what? P into bracket 1 plus N into R over 100. Tomorrow the book will be given to you. Then that time we will solve the problem based on this. As पहले क्या करेंगे? Types की list करेंगे. Alright. Tomorrow before our lecture starts, don't forget to meet Jatin in the office and get the revision books. समझा?
and calculator should be there with you. Okay, then type number 2 is going to be the compound interest. Type number 2 is going to be the compound interest. Type 2 is going to be the compound interest. Now my question to you is, tell me, what is the formula for A in case of compound interest? What is the formula for A in case of compound interest? So A is equal to P into bracket 1 plus R over 100 that raised to N. And then if I want the interest on that, compound interest, then what will you do? It will be P into bracket. It will be 1 plus R over 100 that raised to N and that minus 1. समझा? तो अगर A चाहिए तो P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R ओवर 100 रेज टू N होता है, और इंटरेस्ट चाहिए तो P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R ओवर 100 दैट रेज टू N एंड दैट माइनस 1. अभी होता है क्या, कुछ कैलकुलेटर को यूज करने की ट्रिक्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. अगर मेरे को चाहिए, लिसन केयरफुली नाउ, इफ आई वांट टू गेट x raised to n, where this n is integer, where this n is an integer, integer का मतलब है complete number, integer का मतलब क्या है, complete number. Then my question is, tell me how will you do it on the calculator? You will say x into, and keep on pressing equal to till at the left corner of your calculator you will see a counter. That counter should become n plus 1. That counter should become what? N plus 1. तो क्या समझा? Suppose if I tell you to compute 1.2183 that raised to 7, तो मेरे को बोलो मैं क्या करूं? Tell me what should I do now? 1.2183 that raised to 7. What should I do? So it will be 1.2183 into, keep on pressing equal to till counter should become what? 8. So tell me what number have you got? 3.98363. ये वेरिफिकेशन के लिए कि प्रोसीजर क्या लिखा है उसको वेरीफाई करो. This is if you want x raised to n when n is an integer. कैलकुलेटर यूज करने का अगर आपको स्मार्ट तरीका मिल गया तो प्रॉब्लम सॉल्व करना कोई बड़ी बात होती नहीं है. Then my question to you is, tell me, in case if I want x raised to n when n is a fraction, I want to find x raised to n when that n is a fraction. Now what will you do? At the first step you will press x. At the first step you will press what? X. Then you will do what? You will press root 12 times. Root will be pressed 12 times. लिखो. Then you will say minus 1 equal to. Then you will multiply by whatever power n is there. And then you will add 1. And then you will say into equal to 12 times. Mind well, it is not into equal to. It is into equal to. ये pair है. Into equal to 12 times. Is that clear? तो ये कितना होता है वेरीफाई करो. इफ आई राइट 1.3675 दैट रेज टू 5.58333 करो बाळांनो.
How will you do that? It will be 1.3675. First step. Second step, you will press root 12 times. Then you will say minus 1 equal to. Then multiply by that power which is 5.58333 equal to. Then you will add 1 equal to. And then lastly into equal to 12 times. करो बाळांनो. Go get it, go find it. कितना आया? 5.73844 आया क्या? आया है? Have you understood? The third block that I require, the third block that I would require out here is when you want to find the value of n. Whenever you have to find the value of period n, when you need to find the value of the period n निकालना है मेरे को, तो always you will catch hold of things like this. A is equal to b raised to n. A you know, b you know. A और b की वैल्यू आपको पता है. A is equal to b raised to n. मेरे को क्या चाहिए? n निकालना है. A and b पता है. तो फिर मैं क्या कहूँगा कि ये n is equal to log of a over log of b. n is equal to log of a over log of b. n is equal to log of a over log of b. Now the question arises, how do I find log of a? And similarly we will find log of b. Lekin what is the procedure to finding the log? So first you will press what? A. First you will press what? A. Then you will press root. Does anybody remember? 15 times. A will be pressed 15 times. Then you will subtract 1 from there. And then you will divide by a specific number. What is that? 0.007007 बोला 7027178 divide by 0.000070271778. Repeat करो 0.000070271778. तो तुम्हें n मिलेगा. अब वैसे ही log of b निकालना पड़ेगा. So for example, if I tell you that 2 is equal to 1.035 that raised to n, and I ask you n is what? तुम ट्राई करो, कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. कोशिश करने वालों की हार क्यों नहीं होती? क्योंकि हार तो फूलों की होती है. फेल होने के सदमे से जितना हो सके जल्दी बाहर निकालो खुद को. Go find it. So basically how will you treat this? N is equal to log of 2 and that divided by log of 1.035. अभी log 2 कैसे निकालेंगे? तो you will say press 2, then you will press root count करना पड़ेगा 15 times. Then you will have to say minus 1 and divide by 0.0000
7027178। तो फिर हमें log 2 मिलेगा, और वो log 2 कितना आया बोलो? Will that be 0.3010102, something like that? And that divided by, similarly you have to find log of 1.035. करो जल्दी जल्दी, अपनी उंगलियां नचाओ कैलकुलेटर के ऊपर। कितना आया? 0.014939। अभी ये डिवीजन करो कैलकुलेटर के ऊपर, तो तुम्हें n मिलेगा 20.14 ईयर्स, और इसको ईयर्स एंड मंथ्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 20 ईयर्स कंप्लीट एंड 0.14 मल्टीप्लाइड बाय 12 दीज मेनी मंथ्स, तो फिर 20 ईयर्स कंप्लीट, हाउ मेनी मंथ्स? 0.14 इंटू 12 कितना होता है? करो। 0.14 इंटू 12 कितना होता है? करो। 1.6। अभी 1.6 है कि नहीं, तो उसको राउंड ऑफ करके 2 करो। सी 1.4 होता तो आई वुड हैव सेड 1, बट 1.5 है तो आई विल मेक इट 2। सो 1.6 है तो आई विल मेक इट 2। 5 के ऊपर 5 है, 5 के ऊपर है तो इस नंबर को बढ़ाओ। क्लियर? And the last method that we shall require here is that whenever you have to find the rate of interest R, whenever you have to find the rate of interest R, whenever R has to be found, whenever the rate of interest R has to be found, there I will always get something like this: A is equal to 1 plus R over 100 and that raised to N. You know A, you know N, you have to find R. देखो ये बेसिक चीजें हैं, अगर ये समझ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। So in that case what will I do? That power n will come on to this side and you will get A raised to 1 upon n is equal to 1 plus R over 100. What would I say? A raised to 1 upon n is equal to 1 plus R over 100. Come on. Then the question is, how will you find A raised to 1 upon n? That you have to find like how you found that x raised to n. तो पहले A प्रेस करो, फिर root, how many times? 12 times. Then you will press minus 1 equal to. Now instead of multiplying by n, you will divide by n. Instead of multiplying by n, now in this case you will divide by n because power is 1 upon n. समझा ना? And then as usual you will say, plus 1, and then you will press into equal to 12 times. You will get the value of A raised to 1 upon n, from which you can find the value of R. तो करके देखो. If I tell you, start. If I tell you 2
is equal to 1 plus r over 100 and that raised to 7, and I ask you r is what? Karo. Go get it, go find it. तो पहले उस 7 को इधर लाओ, तो फिर क्या होगा? 2 raised to 1/7 is equal to 1 plus r over 100. 2 raised to 1/7 is equal to 1 plus r over 100. ये shortcuts है, ये short very sweet ways है of doing the calculations. So if you tell me how will you find 2 raised to 1/7? 2. Root, how many times? 12 times. Say minus 1. Then divide by 7. Add 1. And into equal to 12 times. तो ये वैल्यू कितनी आई बोलो? It is 1.1040. That is equal to 1 plus r over 100. As such, 1.1040 that minus 1 is equal to r over 100. And therefore 0.1040 multiplied by 100 will happen to be r. So that r will happen to be 10.4% per year, per annum. That is how whenever we require to find the value of r, we will find the value of r in this way. Is that clear? देखो ये हम इसको बहुत सिंपल रखने वाले, सिंपल है वो, सिंपल बनाने वाले हैं और सिंपल तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले, प्रैक्टिस करने वाले. इज दैट क्लियर? अभी उसमें couple of situations are there in this compound interest. Whenever you are talking about the population growth, whenever you are talking about the population growth, that population growth is always to be treated like a compound interest. That population growth is considered to be like a compound interest. Whenever they are talking about the population, population के growth जो होती है वो compound interest जैसी होती है. But in that case, what will happen? What is P? P is the present or original population. Present or original population. A is going to be the future population. A is going to be the future population. R, अब यहाँ थोड़ा सा उसका नाम बदलता है. It is the rate of growth in the population. It is the rate of growth in the population. And N is as usual number of years. N is number of years. N is the number of years. Clear? Abhi, imagine as the second point, I tell you that the fertility rate और इसे कहते हैं इमिग्रेशन रेट. फर्टिलिटी का मतलब होता है बर्थ और इमिग्रेशन मतलब पीपल मूविंग इन योर कंट्री. तो फर्टिलिटी, बर्थ रेट, समझा? सपोज इफ आई टेल यू इट इज 38/1000. तो ये फर्टिलिटी रेट क्या है? 38/1000 फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज गिवन लाइक दैट. देन mortality rate. mortality का मतलब क्या होता है? डेथ. और ये कभी कभी इन द पेपर दे कैन से एमिग्रेशन रेट. व्हाट इज एमिग्रेशन? पीपल मूविंग आउट. mortality और एमिग्रेशन. एमिग्रेशन मतलब पीपल गोइंग आउट ऑफ योर कंट्री. इमिग्रेशन मतलब पीपल मूविंग इन योर कंट्री. ये समझो मेरे को दिया है 20/1000. तो 1000 लोगों में 38 बर्थ्स होती है.
or 20 people die. So tell me, what is the rate of growth in the population? तो ये अगर तुमने difference लिया, समझा ना? Those people who are born minus the number of people die will give you the rate of growth in the population, and that rate of growth is going to be what? 18 na? But remember, that is over 100 or over 1000. That is over 1000. But we are not interested in over 1000, we are interested in percentage. So what is 18 over 1000 can be written as what? Bolo, 1.8 over 100 ना? एक पॉइंट को मैंने लेफ्ट को शिफ्ट किया, 1.8 over 1000, और इसका मतलब हो गया 1.8%. तो हमेशा ध्यान में रखो कि x% इज नथिंग बट x over 100. x% का मतलब क्या होता है? x over 100. तो 1.8 over 100 is 1.8%. तो fertility rate minus the mortality rate is the rate of growth in the population, which is R. Yeah, the rate of growth क्या है? R. Is that clear? समझा? And the third situation is that sometimes there are changing rates of interest. There are changing rates of interest. जो typical situations है, those we are listing down. Changing rates of interest. So suppose for N1 years, the rate of interest is R1% per annum. For N2 years, the rate of interest is R2% per year. For N3 years, the rate of interest is what? R3% per year. Per year. In that case, what is A? In that case, what is A? That A will be found like this. It is P 1 plus R1 over 100 that raised to N1, 1 plus R2 over 100 that raised to N2, then 1 plus R3 over 100 and that raised to N3, and like that A will be found. So changing rates of interest अगर है तो make a chain of terms. Make a chain of terms. Make a chain of terms. Say yes. Make the chain of terms. Samjha? Is that clear? So that is all about the type number 2. We should solve the problem based on that. But पहले थोड़ा सा जो हमें एक summarize करना था पहले दो types को वो हमने किया है. What we shall do tomorrow when you have a book in your hand, we shall solve the problem based on that, and then we will write down the summary of type 3, type 4, etc. Samjha? So for today a little early, we are going to stop because you don't have a book, but do collect the books by tomorrow before tomorrow's lecture. Samjha? Right? We stop. Don't worry, everything will be fine. सब कुछ अच्छा ही होने वाला है. सिर्फ attendance is a must. Good.